Good morning, good afternoon, and good evening, students. Whenever you want to watch my video, according to that, I have wished you. I hope all of you are great at home. Students, today we are going to begin new chapter, chapter number 15, some natural phenomena. So, some natural phenomena means something is happening around us and you need to understand what is the scientific reason behind this and how it is happening. Scientists have discovered something, they have give us elaboration why these things are happening. Some consequences are there, and in that consequences we have some effect, we have some incident, and in this lesson we are going to seek lots of answer of questions which are in our mind when we are experiencing something around us. Okay, first of all, I would like to tell you what is meant by electric charge. You have already learned about the electric charge related to electric current. Electric current, when we are talking about the electric current, so उसमें क्या होता है, flowing of current होता है, and there is positive charge, negative charge. Negative charge means it is rich of electron, positive charge means it is deficient of electron. In same way, when you have might have noticed that the phenomenon that when you are taking your comb and you are rubbing, rubbing on your dry hairs, if you are doing continuously, it is 1 or 2 minutes, and after that if you will take this charged comb nearby some pieces of paper, this comb is attract that pieces of paper. So why this is happening, ये कैसे हो गया, what is the scientific reason behind this? So it is because that comb acquires some charges, it becomes charged, this comb become charged when we are rubbing it on our hairs, and it acquires small charge. Now that prove that by rubbing bodies, है ना, ये जो rubbing bodies में क्या था, comb can be made charged. हमने उसको हेयर पे रब किया कंटिन्यूसली एंड इट एक्वायर्ड चार्ज, उस पर चार्ज आ गया, कुछ एनर्जी आ गई, एंड वो एनर्जी आ गई है, दैट्स वाई इट अट्रैक्ट्स द पीस ऑफ पेपर. दिस चार्ज्ड बॉडीज आर कॉल्ड, वो जो चार्ज किया है, एक्वायर किया है, वो बॉडीज़ को हम बोलते हैं चार्ज्ड बॉडीज़. टाइप्स ऑफ चार्जेस, नाउ जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट का था, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन. पॉजिटिव चार्ज, इट शोज पॉजिटिव साइन से दिखाई देता है. नेगेटिव चार्ज, वो जो नेगेटिव साइन से हम दिखाते हैं. नाउ वी विल जस्ट इलेबोरेट दिस एग्जाम्पल विथ 3 एक्टिविटीज़, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टेक 2 इन्फ्लेटेड बलून्स, है ना, हवा भरी हुई बलून्स हमने ले लिए हैं. हैंग देम इन सच अ वे दैट डू नॉट टच ईच अदर. हमें उनको ऐसे हैंग करना है कि वो एक दूसरे को टच नहीं हो पाएंगे. देन रब बोथ द बलून्स विथ उलन क्लॉथ. हम क्या करेंगे, ये जो बलून्स लिए हैं उनको उलन क्लॉथ से रब करेंगे. देन यू विल नोटिस दैट दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. क्या क्या किया, what happened, we have hanged 2 balloons which are not which could not touch each other. In this way we have hanged them. After that we have rubbed, हमने क्या किया, उलन क्लॉथ से उसको रब किया, एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड, हमने ऑब्जर्व किया, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, कि बलून मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. सो व्हाट हैपन ओवर हियर, दिस शोज दैट दे एक्वायर सेम चार्जेस. क्या हो गया, दोनों पे हमने सेम उलन क्लॉथ से सेम मटेरियल है, उलन का सेम मटेरियल है. देन दिस उलन का दैट बलून हैज द सेम मटेरियल, उलन क्लॉथ हैज द सेम मटेरियल. सो वॉट एवर चार्ज इज एक्वायर by that balloon, that charges are same. Due to the same charges they repel each other, वो दो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. The conclusion you can made by this activity, same charges repel each other, they go away from each other. Now let us perform another activity. एक और activity we are going to do. Take a refill of pen का एक refill लेना है, rub it with पॉलीथीन लेना है, पॉलीथीन पे रब करना है उसको. देन प्लेस इट इन अ टम्बलर, एक टम्बलर में स्टैंड रख के उसमें वो रिफिल यू हैव टू कीप इट. देन रब अनादर रिफिल, एक और रिफिल ले लो, उसको फिर से रब करो विथ अ पॉलीथीन एंड ब्रिंग इट क्लोज टू प्रीवियस रिफिल.
what is happen, you will notice that they both repel each other. क्या हुआ, जो हमने लिया मटेरियल, सबसे पहले वी हैव टेकन रिफिल विच हैज़ द सेम मटेरियल, वी हैव टेकन फॉर रबिंग पॉलीथीन सेम मटेरियल है, हमने क्या किया, वी हैव रब्ड इट, इट एक्वायर चार्ज, बोथ द रिफिल हैव एक्वायर्ड चार्ज एंड व्हेन वी हैव placed it close to each other, so these both acquired charged refills repel each other, means they are charged with the same charges, उन पे same charges आया है. Now we do an other activity, एक और activity करना है. So with the help of this activity you come to know what happened when the same charged body come to close each other, come to other. So what happened, there is repulsion, we have already seen that, in which we bring charged bodies of different material. Refill were the सेम हमने लिया था, रिफिल सेम मटेरियल से बना हुआ था. बिफोर दैट वी हैव टेकन बलून, दैट बलून्स वर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, so repulsion was there, you know. And now what we need to do, हम क्या करने वाले हैं, in this activity we are going to take different types of material, you know. Let us say we try to bring inflated balloon rubbed with woolen cloth. क्या करना है हमें, हमने बलून ले लिया जो इन्फ्लेटेड है, जिसमें हवा भरी हुई है, वी हैव रब्ड इट ऑन वूलन क्लॉथ, ओके, इट हैज़ वन चार्ज, नाउ इट एक्वायर चार्ज. Now what we need to do, we will take one refill and we will rub it on polythene, definitely it will acquire charge. Now what we need to do, we will notice that they both try to move closer. So this balloon is acquired body, charged body, and this refill is also charged body. But when this charged body, we are just putting it close to each other, it attracts, means what happened, this refill and this balloon has the different types of charges, and that's why they are attracted. These three activity, let us to conclude that with the help of these three activities we can conclude a charged balloon repelled charged balloon, okay, and a charged refill repelled charged refill. This was the second activity, and with the help of this third activity, a charged balloon attract a charged refill, which clearly indicates that charge on balloon was different from charge on refill, and that's why they were attract each other. We conclude charges are of two types. Positive charge, we are indicating it with the help of positive sign. Negative charge, we indicating it negative charges, and you can see on your screen that glass rod and the positive charge, negative charge, all that things, okay. This idea came from the fact that when we rubbed glass rod with silk, glass rod acquired positive charge and silk acquired negative charge, and also the electric charges produced by rubbing are static, but when charges move they constitute the current, okay. Now transfer of charges, next topic is transfer of charges. Charges transfer हो पाते हैं क्या, is it happen? So to study it, let us perform an activity. With the help of activity we are going to study about the transfer of charges. Take an empty jar, एक empty jar लेना है, empty jar ले लो, you can take a bottle of jam, that is also that should be empty, you know, so that become a jar. A cardboard slightly bigger in size, and place it on a mouth of bottle, pierce a hole in it so that metal paper clip can insert it. क्या करना है, जैसे एक जार ले लिया, उसके ऊपर वी आर गोइंग टू प्लेस अ कार्डबोर्ड पेपर, बट इट शुड हैव द होल, जिसके अंदर से हम जो क्लिप है, पेपर क्लिप वी आर गोइंग टू, मेटल क्लिप वी आर गोइंग टू इंसर्ट इन इट, सो इट शुड हैव द होल. सिंपल थिंग you have to do. Cut 2 strips of aluminium and hang them on a paper clip as shown, है ना. ऐसे हमें क्या करना है, 2 strips of aluminium and hang them on a paper clip as shown, जैसे दिखाया हुआ है वैसे हमें करना है. Charge a refill and touch it with the end of paper clip. अब क्या करना है, charge refill लेना है and उसको पेपर क्लिप के observe what happens. Notice the effect of foil strips. The strips move away from each other. वो strips क्या हो गई, एक दूसरे से
अलग मूवमेंट कर रही है, तो इससे हम एक व्हाट कंक्लूजन वी आर गोइंग टू मेक, व्हेन चार्ज रिफिल इज बॉट नियर द पेपर क्लिप, द चार्ज फ्रॉम क्लिप transfer to metal foil. So transfer of charges is taking place over here, and with the help of this activity you can understood that when charged refill इज बॉट नियर द पेपर क्लिप, हमने क्या किया, पेपर क्लिप के पास हम वो चार्ज रिफिल लेके गए, द चार्ज फ्रॉम क्लिप ट्रांसफर्स टू मेटल फॉइल को वो चार्ज ट्रांसफर हो गया, एज बोथ द स्ट्रिप्स एक्वायर्स द सेम चार्जेस एज दैट ऑफ रिफिल, देयरफॉर दे रिपेल each other and move away from each other. I think it is very easy to understand. जैसे सेम मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हैं, and if we will rub it, if we will give it charge, so it will have the same charge, and that's why they are repelled to each other. This is we have already discussed in a first and second activity, but in this activity I want to tell you, I want to elaborate with this activity that we can transfer the charges. As I said, and lots of time I told you students, even in sound lesson also I have told you, if मैं बोल रही हूँ means what is happening actually in terms of science, I am transferring my energy, you know, बोलना भी क्या है, वो ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर करना है. सो सेम थिंग हैपन ओवर हियर. सो क्या कर दिया, अगर हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं तो वी कैन ट्रांसफर द चार्जेस, एंड दिस एक्टिविटी, विद दिस एक्टिविटी वी केम टू नो वी कैन ट्रांसफर द charges. Okay, I hope students you understood this fact. But when you touch the charged paper clip with hand, you will notice the foils again collapse. अब क्या हो जाएगा, अगर हम when we are going to touch the charged paper, जो चार्ज पेपर है उसको अगर हम टच करेंगे तो वो जो रिपल्शन था वो खत्म हो जाएगा, you know. And collapse, this that notice the foil again collapse. This is because when you touch it with hand, they transfer their charge to earth, and our body is medium. हमारी बॉडी क्या हो गई, मीडियम हो गई, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ. हम लैंड पे खड़े हैं, तो हमने अगर पेपर को टच किया तो हमने वी एक्वायर दैट चार्ज, बट हमने क्या किया, वी बिकम मीडियम. हम मीडियम हो गए, एंड दैट चार्ज फ्लोज टू द, कहाँ पे चला गया, अर्थ में चला गया. देयर चार्ज टू अर्थ through your body, and as a result they become discharge. पहले क्या हो गया, किसी चार्ज बॉडी से चार्ज दे दिया, वो ट्रांसफ़र हो गया, वो जो चार्ज आ गया था, दैट एक्वायर्ड बॉडी, उस पेपर को हमने टच किया, दैट चार्ज इज ट्रांसफर टू आवर बॉडी टू द अर्थ, एंड दैट पेपर बिकम, वो क्या हो गया, चार्जलेस हो गया. So we can, this process of transferring charge from charged body to earth is called earthing. This is new concept students. हमने transfer of charge we have seen, refill से जो दिया था that was different. Now we are talking about the earthing. हम earthing की बात कर रहे हैं. I think you might have heard, और आपने कहीं पे देखा भी होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जैसे किसी इंसान को, समवन, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो वो दैट पर्सन बिकम मीडिएटर, वो मीडिएटर बन गया, वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी किया उसने, एंड आवर बॉडी डज नॉट बेयर दैट इलेक्ट्रिक शॉक. वो जो इलेक्ट्रिक फ्लो इतना ज़्यादा होता है, व्हेन हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, इन दैट केस, ओके, ये जो हम दिस नेचुरल फिनोमेना के इलेक्ट्रिक चार्जेस की बातें हैं, तो ये चार्जेस बहुत छोटे होते हैं, इट एक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट कुड नॉट, हमें कोई मेजर, वी आर नॉट गोइंग टू इंजर्ड और हर्ट, यू नो. सो इससे हम फील कर सकते हैं, बट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है. बट वो जो इलेक्ट्रिक करेंट की हम बात कर रहे हैं, इन दैट केस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ऑल्सो, बिकॉज अवर बॉडी इज नॉट बेयर दैट इलेक्ट्रिक करंट. बट वो अर्थिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग यू माइट हैव हर्ड. नाउ आई थिंक योर कंसेप्ट इज क्लियर. ओके, so this device made that is used to detect the charge on the bodies is called electroscope. This is also new concept. Electroscope क्या है? This is the machine, you can say, this is the device, you can say, that is made up of to detect the charges on the body. Bodies पे charges, which type of charges are on the body, so such type of device is called as electroscope. जैसे you can see on your screen, metal foil है ऊपर दिखाई हुई है, then cork है,
copper wire inside. Copper is a good conductor of electricity. वो गुड कंडक्टर है. जैसे चार्जेस को भी मूव करने के लिए इट गिव्स परमिशन. उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है इट इज़ इन दिस वे. इवन एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो मेटल, कॉपर इज ऑल्सो मेटल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ electricity. There are so many destructive phenomena to some extent, like volcanoes हो सकता है, lightning है, earthquakes है, etc. लाइटनिंग का तो इट इज़ रिलेटेड टू दिस चार्जेस. वो इस चार्जेस से आई एम गोइंग टू एलैबोरेट. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अब तक आप लोगों को लगेगा कि येस मैडम हैज़ टॉट समथिंग डिफरेंट, है ना, कुछ नया मैडम ने बताया हुआ है. सो दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वोल्केनो, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. दिस आर नेचुरल फिनोमिना. Clear students? The name of chapter is some natural phenomena. So what are the example? You can give the example of cyclone also, this lightning, then earthquake. So these are the example of natural phenomena. We are going to discuss about two important phenomena, that is lightning and earthquake. So this lightning and earthquakes are related to our charges. Okay, so whatever that basic or fundamental information I have given, now you have to put that information in this mechanism, so you will come to know how this is happening. This lightning is an electric spark. Lightning क्या है? Electric spark है on huge scale, बड़े amount में. This is electric spark. It is caused due to accumulation of charges on cloud. क्यों हो रहा है? Because clouds acquired charge, cloud acquired energy की वजह से क्या हो रहा है? चार्ज आ रहा है उनके ऊपर, एंड दैट्स वाई देयर इज लाइटनिंग. एंड दैट क्यों, वाई देयर इज, क्यों है वहाँ पे चार्जेस, क्यों हो रहे हैं? यू माइट हैव ऑब्जर्व कि जैसे बहुत ऐसे हवा आती है ना, सबसे पहले जैसे बारिश आने से पहले. सो क्लाउड का वहाँ पे क्या हो जाता है? फ्रिक्शन. जब व्हेन स्पीड इज देयर, एयर इज देयर, तो वो एक दूसरे पे रब होते हैं, एंड डेफिनेटली देयर इज चार्जेस. वहाँ पे चार्जेस क्रिएट होते हैं ऑन अ स्टॉर्मी डे, है ना. नाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस वे कि लार्ज पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड्स गैदर इलेक्ट्रिक चार्जेस. क्लाउड्स के पार्टिकल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस आ ही जाते हैं, डेफिनेटली आ जाते हैं, बिकॉज वो स्टॉर्मी डे होता है. सो एज वी नो, इन क्लाउड्स देर आर मेनी स्मॉल एंड लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. क्लाउड में क्या होता है? बहुत मीन्स मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर देयर. सो वो ड्रॉपलेट बोल सकते हो, यू कैन से मॉलिक्यूल ऑल्सो. The smaller water droplets acquire positive charge. जो छोटे वाटर ड्रॉपलेट हैं वो क्या एक्वायर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज, एंड मूव अपवर्ड रीजन इन क्लाउड्स. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वो जो पॉजिटिव चार्जेस है, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट ने पॉजिटिव चार्जेस एक्वायर किए हैं, दे मूव अपवर्ड्स, वो ऊपर चले जाएंगे, वो क्लाउड में. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्लाउड. ओके, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड यू विल कम टू नो. ऑन द अदर हैंड, द लार्जर वाटर ड्रॉपलेट, अब क्या है? नाउ द मटेरियल इज सेम, यू नो, बट द साइज इज डिफरेंट. छोटे वाटर मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे, वो क्लाउड के ऊपर के इट विल मूव टुवर्ड्स द अपर साइड of that cloud, and the bigger droplet they will acquire the negative charge and moves down, and वो नीचे आ जाएंगे. we are talking about the cloud. So what happen over there? There are different type of charges. Now when two clouds carrying charge come closer, a discharge occurs through a small air gap. अब दोनों जैसे two clouds है, both are charged, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला निगेटिव है, एंड वो जैसे एक दूसरे के पास आएंगे थ्रू अ स्मॉल एयर गैप, थोड़ा सा एयर गैप रहेगा बिटवीन द क्लाउड्स. द डिस्चार्ज एक्कम्पनीज द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट. अब ये चार्ज्ड है, वो दोनों एक दूसरे के पास आ गए, तो व्हाट विल हैपन? फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? हीट, साउंड एंड लाइट प्रोड्यूस होगा. The clouds at the lower end charge the buildings and trees by process induction, such that they acquire opposite charge with respect to clouds. Due to this, heavy flow of charge occurs between buildings and clouds. This heavy flow can damage several buildings. क्या हो जाता है?
कि ये एक सीक्वेंस में आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। एज आई सेड, क्लाउड में क्या हो गया, क्लाउड में जैसे हमने क्लाउड की बात की, द अपर पोर्शन इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, द लोअर पोर्शन इज मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब दूसरा क्लाउड आ जाएगा, तो ये जो ऊपर एक क्लाउड है इसका निगेटिव चार्ज है, बट जो उसके नीचे जो क्लाउड आ गया उसके अपर पोर्शन में, इट्स अपर पोर्शन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऊपर वाला निगेटिव एंड नीचे वाला पॉजिटिव। सो ऐसे क्लाउड का एक क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऐसा कंटिन्यूसली इट विल हैपन एंड वो बिल्डिंग तक चला जाएगा एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कैन हैपन। हम जो बोलते हैं ना, बिजली गिर गई एंड ऑल दैट थिंग्स। सो व्हाई दिस इज हैपन, आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। मैंने जो क्लाउड का मैकेनिज्म दिया है, एंड इफ यू विल गो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन यू विल क्लियरली कम टू नो हाउ दिस इज हैपन। This flow of charge from clouds to earth is called lightning. ये lightning है। अब देखो, you can see on your screen and I hope you can understand what I said, what I elaborate in front of you. This lightning is harmful as well as have certain advantage too. क्या है, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं एंड कुछ एडवांटेजेस भी है। हार्मफुल इफ़ेक्ट में जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग होता है, अगर फॉरेस्ट में ये लाइटनिंग हुआ है तो डेफिनेटली ट्रीज़ को, एनिमल्स को, एनिमल्स दे आर टेकिंग शेल्टर अंडर केव, जैसे केव में चले जाते हैं, बट प्लांट्स को एंड सम एनिमल्स, बर्ड्स भी हो सकते हैं, दोज दे आर स्टेइंग ऑन द ट्रीज, तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। समटाइम इट हैपन्स, कोई ह्यूमन बींग इफ़ दे आर कॉट इन दैट स्टॉर्मी डेज में कहीं पे वो फंस गए, तो वहाँ पे भी पॉसिबल है कि डेथ ऑफ दैट पर्सन। Now we will talk about the disadvantage. It can destroy properties and life. एज आई सेड, प्रॉपर्टीज़ में से जैसे घर है, कोई बिल्डिंग है आपकी, कुछ भी हो सकता है। सो उसका लॉस हो सकता है इवन इफ ह्यूमन आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम, तो उसका डेथ भी है। सो ऑल दिस थिंग इट वॉज, सो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो लेक्चर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म, you understood, you learned lots of new things. Thank you for watching this video. Take care. Bye bye.